देखिए, मैं एक ज़माने में सर्विस में था और सर्विस से रिटायर होने के बाद मैं फार्मिंग कर रहा था और आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट माइंड साइंसेस। तो इट वाज लाइक एन एक्सीडेंट कि एक दफ़ा मुझे ऐसे ही बताया किसी ने कि एक कोर्स चल रहा है माइंड साइंसेस का। तो मैं उधर पहुंच गया। मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या है इसके अंदर। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने और पढ़ा उसके बारे में, फिर और पढ़ा, फिर और इस किस्म के रिलेटेड कोर्सेज किए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि ये तो ऐसी चीज़ है कि जो मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आई शुड कंटिन्यू लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर। और मैं इसके अंदर इतना डीप जाता गया कि जब मैं यहाँ से अपने फार्म पर जाता था, लैंड्स पर, वर्किंग लाइक अ फार्मर अपनी लैंड्स के ऊपर, मैं अपनी जीप में जाना, हैट लगानी, बड़े बूट पहनने और फार्म पे पहुंच जाना उधर। अब मैं दिन भर के लिए उधर हूँ। 4 to 5 days in a week आई एम एट माई फार्म। और वहाँ पे मैंने बतखें भी पाली हुई थी, मुर्गियाँ भी थी, डॉग्स भी थे, गाय भैंस भी थी, बकरियाँ भी थी। एंड द मोमेंट दे हियर माई जीप कमिंग, और वो सारे दूर दूर से जमा हो जाते थे at the gate to receive me. It was such a pleasure there. Anyway, वहाँ पर I had time and I was so deeply involved. I studied, took my computer with me, and I kept studying this mind power thing more and more. So much so, और मुझे उसमें इतना मज़ा आ गया लोगों को हेल्प करने में। I had no idea कि मैं क्या कर रहा हूँ। I was just moving along something that I like to do. And वो जो मेरे साथ मुजारे होते थे, मेरे लेबर होते थे, उनको कोई प्रॉब्लम्स आती थी, इत्थे आ भाई, इत्थे बह जा। और वो I am treating him in Punjabi and Urdu and I am getting results. It was such a pleasure to me. When they are getting better, I am feeling good. इसी तरह घर में आए शाम के वक्त, किसी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम है, आए इधर, आए बैठे मेरे साथ, एंड वी आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम और हर एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। एंड इनिशियली पीपल वर स्केप्टिकल अबाउट इट। दे सेड आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप मज़हब से दूर तो नहीं जा रहे? And I said, no, it is exactly according to my religion, because I am helping people out. There's nothing wrong. There's nothing, no such thing as Jadoo Tona that I am doing. It's something which is working. And I started helping people and enjoying it. For the next 3 years, it was like it was my love affair with the mind sciences. And it is continuing even now. The whole therapeutic system is developing in me even now. Whatever little time I get, I do research and develop it, because it's not a job for me. It's my hobby. It's something which I'm loving. NLP stands for Neuro-Linguistic Programming. Neuro, mind, linguistic, language and programming of the mind. ये सारी चीज़ें काम करती हैं इसके अंदर. It works through our 5 senses. हम हर चीज़ जो भी लर्न करते हैं वो 5 senses के थ्रू लर्न करते हैं, और इन 5 senses के थ्रू बचपन से डेथ तक हमारा एक मैप ऑफ द वर्ल्ड बनता है. हकीकत क्या है कुछ पता नहीं है किसी को भी. हर एक को ये पता है कि उसका मैप क्या है, उसके अंदर मैप ऑफ द वर्ल्ड क्या है. हकीकत हर एक के लिए वही है जो उसका मैप बता रहा है. अब उसके मैप अगर डिफेक्टिव है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसी किस्म की. अगर मैप बहुत अच्छा है तो उसकी उसी तरह की थॉट फॉर्म है, उसी तरह की परफॉर्मेंस है उसकी,
and behavior also conforms the map. It's just like you're putting on yellow glasses and you see everything yellow. So whatever our map tells us, that is the truth and that is the reality for us. Otherwise there is no reality. So NLP क्या करती है कि हम देखते हैं कि उन 5 सेंसेस की वजह से जो क्वालिटी ऑफ मैप है वो क्या है. 5 सेंसेस, सीइंग. अब ये सारी सेंसेस सिर्फ सेंसेस नहीं है, दे आर सिस्टम्स. हाउ? सीइंग externally, like I'm looking at you, you are looking at me. Internally, if I ask you to look at a door in your house, the main door, you can look at it very clearly. It's internal vision, internal seeing. Similarly, all 5 senses, external and internal. So if those 5 senses are making a structure of an experience, like whatever experience we go through, whatever thought form it is, it has a structure. जैसे इस कमरे का स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर बनता है थ्रू विजन, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग. दीज आर द 5 सेंसेस. उनका एक स्ट्रक्चर बनता है. अब वो स्ट्रक्चर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो भी बन जाए वो. अब अगर हमने उसको चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं कि अगर विजन के अंदर, सीइंग में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो उसको तंग कर रही हैं, जो कि अच्छी नहीं है, तो हम उसको विजन वाली, सीइंग वाली चीज़ों को एनएलपी के थ्रू चेंज कर देते हैं. मसलन आपके सामने एक नेगेटिव चीज़ है जो बहुत तंग कर रही है पास्ट की, और वो ऐसी चीज़ है जिसको आप जब देखते हैं उसके बारे में तो यू फील बैड, यू फील स्केर्ड, और यू फील द फियर इनसाइड यू. अगर वही पिक्चर दूर चली जाए, फियर कम हो जाएगा, बैड फीलिंग्स कम हो जाएंगी. वही पिक्चर ब्लर हो जाए, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा. वही पिक्चर आपकी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा. इसी तरह हर सेंस का जो इम्पैक्ट हमारे अंदर आ रहा है, अगर हम उसको चेंज कर दें तो वो क्या होता है कि उसके इम्पैक्ट हमारे अंदर डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल. तो हम उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं हमारे अंदर से, जो एक नेगेटिविटी वहाँ पे क्रिएट हो रही है. तो उस डिलीशन के बाद हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है. उस स्पेस को फिर आसान हो जाता है भरना थ्रू रीप्रोग्रामिंग एंड रिक्रिएटिंग न्यू पिक्चर्स, साउंड्स एंड फीलिंग्स. दिस इज इन वेरी ब्रीफ how NLP works. NLP is one subject which has grown very rapidly throughout the world. Many heads of the states, heads of the corporates, they have learnt NLP and very successfully employed wherever they were working. Just because it's software of the brain. And it can work for everything. Now NLP is in education, it is in administration, it is in leadership, it is in management, it is in health, it is removing fear and phobias, it is improving your performance, it is improving in a big way the relationships. You talk of any subject and NLP is there to help you out. It's just that it has become so powerful and the world is practicing it. It depends on what the corporate is and what their requirement is. Like in one of the cases, एक उनकी annual sales meeting हो रही है, और वहाँ पर they asked me to help them out. इसलिए कि एनुअल सेल्स के जो टारगेट्स हैं, दे कुड नॉट मीट दोज टारगेट्स.
from last 2 years, they were failing to meet their targets. All I did was to remove those perceptions, fears, and that failure patterns in their minds. And once that was done, I reprogrammed them for a new future. You can create your future once you create a gap inside, space inside. Then you recreate through these 5 senses. It's all through these 5 senses. It's so amazing. We take these 5 senses for granted. कि ये तो अल्लाह ने दी हैं तो बस ठीक है, हम सिर्फ देखने, सुनने और खाने पीने के लिए हैं. लेकिन एक्चुअली सारा हमारी लाइफ इन्हीं के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है. तो आप फिर जब गैप निकाल लेते हैं, अंदर से स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, उनके परसेप्शंस कि ये नहीं हो सकता, ये ख़राबी है, ये तो सेल्स आगे बढ़ नहीं सकती, इसमें हमें इतने लॉस हो गए थे पिछली दफ़ा, वी कुड नॉट मीट द टारगेट. और फिर आप उनको रिक्रिएट करते हैं फ्यूचर, जिसमें आप देखते हैं कि सचमुच हो गया है. और यहाँ पे हम हिप्नोसिस की हेल्प भी ले सकते हैं. यू कैन आस्क देम टू गो इन ट्रांस, रिलैक्स करें, और वो फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आ जाता है, विच इज़ वेरी इम्प्रेशनेबल. और हमारी जो आवाज़ होती है, जो सजेशंस होते हैं, दे गो अनफिल्टर्ड through right into the subconscious mind, and then it is easier to reprogram and recreate those images and pictures, and that's NLP. And in that they believe. If you say ऐसा होगा, then the subconscious mind, there is no impact on the subconscious mind. होगा, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, there is a doubt about it. And when you say ऐसा हो गया है, it has happened, you are successful, you have met the sale targets, you have exceeded your targets before time, and you make them believe it, then the subconscious mind, once this suggestion is planted in the subconscious mind in a real way, as if it has already happened, then you start moving in that direction and you do it, and it really happens. This is programming of the subconscious mind. देखिए, एक स्ट्रेसफुल जो पर्सन होता है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, और स्ट्रेस की नौयत बहुत सारी डिफरेंट हो सकती है, और पर्सन टू पर्सन स्ट्रेस वेरी कर सकती है. अब डिपेंड करता है कि उसको किस वजह से स्ट्रेस हुई है. सपोजिंग उसको फियर्स हैं किसी चीज़ के, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती हो, उसके लेग्स वीक हो जाते हों, उसके हाथों में स्वेटिंग शुरू हो जाती हो, उसकी ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम आती हो, सफोकेशन फील होती हो. सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. इसी तरह डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड के सिम्टम्स हो सकते हैं. तो अगर ये सिम्टम्स हैं, तो यू टेक वन सिम्टम एट ए टाइम एंड ट्रीट इट. इसमें क्या हो रहा है कि वही उसकी 5 सेंसेस इंटरनली डिस्टर्ब हुई हैं, एंड यू टेक वन एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन अ बंडल ऑफ देम टुगेदर एंड ट्रीट देम एंड चेंज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. इसको हम थोड़ा टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ. इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी रिप्रेजेंट समथिंग इंटरनली, राइट. इतना फ़र्क होता है लोगों का एक ही चीज़ देखने से. एक कपल, ये इंडियन पिक्चर आजकल आई हुई है, क्या नाम है उसका, वो जो पद्मावती, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं. वो गया वो पिक्चर देखने के लिए, जो वाइफ थी वो तमाम पिक्चर में सैड, और उसको रोना आता रहा. क्यों? कि वो जो लव स्टोरी थी उसकी, उसमें बहुत आजमाइशें थी, एंड यू नो द लवर्स वर अनसक्सेसफुल एंड बोथ डाइड इन वन वे और द अदर, and it was a sad story. She was looking at the whole picture as a love story. It was a historical movie.
Whereas the husband never even thought for a moment that it was a love story. He thought it was a historical picture, and he was analyzing the whole thing as to whether it is historically correct or incorrect or exaggerated or totally adulterated and misrepresentation of the history or what. So the entire perception of the two people of the same movie was totally different. Why? Same thing, map of the world. What? It doesn't matter what the reality is. What matters is what the map of the world is saying. Similarly, when somebody takes and goes into stress, it doesn't matter what the reality is. It depends how that person has taken things inside. So it is internal representation of pictures, sounds, and feelings. So what we do is remove those negative things first, minimize them or delete them through various exercises. And then space is created, and then we add into more things, like very recently. देखिए 1 minute wonder is energy therapy. Before I tell you anything about it, I must tell you that I love it. I combine it with NLP and hypnosis and so many other things. Energy therapy means there are 14 meridians in the body. You will ask me, what are meridians? Very simply, meridians are energy channels in our body. Just like the blood vessels which carry blood, meridians carry energy throughout our body. And they are real. They're not like imaginary, they're real. Science has proved them through various methods as real. Whenever there is a problem, any of the meridians are blocked. In 1 minute wonder, there are 14 points specially selected, either at the beginning or end of a meridian. Because there are special points, and tapping on them, tapping like this, helps to stimulate the meridian and generate positive energy and open the blocks in the meridians without somebody knowing what's really happening. It works directly at the subconscious mind, also at the conscious mind, and in very short time we get wonderful results. Like a lady recently came to me, a career woman. She was fired from her job. Just one fine morning, the boss said, tomorrow you don't have to come to the office. Just imagine. It was a big shock for her. Mother very seriously ill, very serious relationship problems she was going through. When she came to me, she was a broken lady. In just 3 sessions, she regained herself. The past was past. She learned from there and recreated a wonderful new future for her. She was smiling, and she is on to her life, moving on happily. Energy disruption, whenever there is a problem, please remember this thing. Whenever there is a problem, I repeat, please remember this. There is disruption of energy in the body. And our therapeutic systems, they harmonize and balance that energy. That's all. All disease of any kind is also disruption. Stress of any kind is disruption. So this is 1 minute wonder. That look, we say that this learning process is from cradle to grave. यानी कि बचपन से पैदा हुए और grave तक learning होती है. Everyone should learn these things. Whether he is a doctor, he is a professional, he is a lawyer, he is a businessman, a housewife, a student, everybody should learn these things. These alternative medicine things like NLP, 1 minute wonder, hypnosis partially in specialized courses. These things are very important because they improve the quality of life. They help one's own self and others also. And they improve the professional life
personal life, relationships. And what is important is that so far as we live, we should live happily, and whatever we perform, we should perform at our peak without taking stress or least amount of stress. And we should be able to realize our talents more and more as we progress in life. And all these subjects help us to do that.